Hey guys, welcome back to See Your Dreams YouTube channel. So this is the lecture number 5 of your chapter number 4 of auditing. And I know I haven't uploaded the video from a very long time because I was busy in some personal issues, and today I've got some time and so I'm recording the video. My videos can maybe delayed in future also, so please really sorry for that, but I'm trying my best to complete this chapter as soon as possible. Also, I have made some change because my audience was getting confused, especially the audience which was in Hindi explanation only. They are saying that please explain the whole video in Hindi, but some of my students from South India, they want the video in English. So what I have decided is that the first half of my video will be in Hindi and the second half, okay, the topics I'll cover in the first half in Hindi, I'll explain the same topics in English in the next half, and I'll drop the timestamp from where English explanation will begin. Okay, so the students who want the whole explanation in only English may just click on that timestamp and they can view the English explanation from there. And first I'll explain the whole topic in whole topics or topic whatever I want to in Hindi, and then those topics in English. Okay, but before skipping, please let me tell you that you have to write the essay names in the comment box for these essay numbers: essay 200, 210, 220 and 230. Okay, I may have repeated these essay numbers before also, but as there was a long break in the videos, so that is why I have given these numbers again. And please do participate in this activity because this will help you in remembering the essay numbers with essay names. Okay, you just have to write the essay names of these essay numbers. Now starting with the topic, first I'll explain you in Hindi. Okay, so my English students, you may skip to the timestamp. Okay, yeah. Studies of various aspects of internal control is divided into 4 sections. हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक कवर किया था. We have covered till benefits of understanding of internal control. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं इंटरनल कंट्रोल के. आस्पेक्ट्स का क्या मतलब होता है? एरिया. तो ये जो है ना, हमारा एरिया जो है इंटरनल कंट्रोल का, ये हमारा 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है. अब वो 4 सेक्शंस हमारे क्या हैं? तो जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की जो इंटरनल कंट्रोल है उसकी क्या जनरल नेचर है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फिर साथ ही में जो कंट्रोल रेलेवेंट है वो क्या है उस ऑडिट के लिए, एंड नेचर एंड एक्सटेंट. नाउ कंट्रोल्स तो बहुत सारे होते हैं, तो जो हम ऑडिट करें उसके लिए कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट है वो चीज़, ठीक है ना. फिर नेचर एंड एक्सटेंट क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है रेलेवेंट कंट्रोल्स की, उसका नेचर एंड एक्सटेंट कितना होना चाहिए, एंड कंपोनेंट्स क्या हैं इंटरनल कंट्रोल के. तो ये हमारे 4 बेसिक एरियाज़ हैं इंटरनल कंट्रोल के. सो द क्वेश्चन माइट बी दैट यू हैव टू टेल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है ना. तो जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो पर्पस आता है. फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो लिमिटेशंस आता है, एंड इसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट जो है कंट्रोल्स एलिमेंट वाला वो हो जाता है. तो जो हमारा इसमें फर्स्ट सेक्शन है ना एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का, वो जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब जब भी हम किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके नेचर के बारे में बात करते हैं तो हम पहले तो ये जानेंगे कि वो क्यों है, फिर हम ये जानेंगे कि उसके होने से या ना होने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या उसके अंदर क्या लिमिटेशंस एंड क्या बेनिफिट्स है उसके. तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस कि क्या पर्पस है इंटरनल कंट्रोल का. तो इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन टू एड्रेस आइडेंटिफाइड बिजनेस रिस्क दैट थ्रेटन द अचीवमेंट ऑफ एनी ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव दैट कंसर्न. अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो इंटरनल कंट्रोल हम लोग क्यों करते हैं? इंटरनल कंट्रोल हम लोग इसलिए लगाते हैं, इस तरह से हम लोग डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट और मेंटेन करते हैं जिससे कि जो बिज़नेस रिस्क है ना, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, वो कम हो जाए. ठीक है, एलिमिनेट होना तो पॉसिबल ही नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा है, बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशंस है. तो अगर हम लोग कंट्रोल्स लगा देंगे तो वो जो रिस्क है हमारे वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे, ठीक है ना. तो वो हमारे एंटिटीज़ के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो किस कंसर्न के, मतलब रिस्क जो है वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स में हो सकता है जो कि एंटिटी के हैं. तो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो रिलायबल ही ना हो. फिर इसके बाद में जो ऑपरेशंस है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो इन सारी बातों में जिसका इन चारों जो बातें हैं, ये जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, जिससे इसमें जो रिस्क है, रिस्क किस बात का, कि इसमें गलतियाँ हो रही, इसमें फ्रॉड हो रहे, इसमें मिस स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँ, उसके लिए हम लोग कंट्रोल्स को डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करते हैं.
ठीक है ना। फिर उसके बाद में कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो लॉज एंड रेगुलेशन से ही वो ना करें कंप्लाई। एंड जो हमारे एसेट्स हैं उसको सेफ गार्ड करने के लिए भी हम लोग कंट्रोल्स लगाते हैं जिससे उन एसेट्स का कोई मिसयूज़ ना कर पाए। So the way in which internal control is designed, implemented and maintained varies with an entity size and complexity. तो ये जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है ना, इसको लगाने का तरीका हमारा एंटिटी के साइज़ और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उस एंटिटी में वो वेरी करता रहता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि कंट्रोल्स तो चलो हमने लगा दिए, हम लोगों ने रिस्क भी कम कर दिया, बट इन इंटरनल कंट्रोल्स के भी ना कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस हमारे क्या हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस। अब अभी मैंने आप लोग को जस्ट ये बात बताई थी कि जो हमारा रिस्क है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, द रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, राइट। तो ये जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है ना, ये इस बात की सिर्फ और सिर्फ रीज़नेबल एश्योरेंस देगा कि जो आपका रिस्क है वो कम हो गया है। आपको ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिल पाएगी कि रिस्क जो है वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि हर टाइम आपके जो है परफेक्टली रिलायबल हैं, मतलब कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा ही कि हो सकता है कुछ गलती हो। ठीक है ना। तो ये यही कह रहे हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है इससे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़नेबल एश्योरेंस होता है। तो इंटरनल कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव, कितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो, कैन प्रोवाइड एन एंटिटी विद ओनली रीजनेबल एश्योरेंस। सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही हो सकता है अबाउट अचीविंग द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना। फिर कुछ ना कुछ रिस्क रह ही जाएगी चाहे आप कितने भी इफेक्टिवली इंटरनल कंट्रोल लगा लो। तो ये इसकी इंटरनल कंट्रोल की फर्स्ट लिमिटेशन हो गई। एंड द लाइकलीहुड ऑफ देयर अचीवमेंट इज अफेक्टेड बाय इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर उसके बाद में इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, तो उस वजह से भी हमारी जो है रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकती, एंड इसलिए हमारे इंटरनल कंट्रोल है वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही देते हैं। ये मतलब है इस बात का। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब ह्यूमन जजमेंट है, सपोज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ना। कोई एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है। अब क्या इन चारों के चारों लोगों का सेम पर्सपेक्टिव होगा, सेम व्यू होगा, या अगर इन चारों को बोला जाए कि आप चारों लीडर हो और आप चारों अपनी अपनी तरफ से कोई एक डिसीजन लो एंड जो भी बेस्ट हम लोग को लगेगा फिर हम उसको जो है लीडर फाइनलाइज कर देंगे, तो क्या इन 4 लोगों का सेम डिसीजन होगा? नहीं। क्यों? बिकॉज ये चारों क्या हैं, ये चारों ह्यूमंस हैं। बट अगर हम एक मशीन ले लेते हैं, 4 मशीन ले लो आप, ठीक है, 3 ले लो चलो, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आप लोगों ने सेम तरह से जो है वो इनपुट करा, सेम ही क्वेश्चन उन लोगों से पूछा, तो ये जो है सेम कंपनी के सारा सेटअप इन लोग का सेम है, इन तीनों कंप्यूटर्स का, इन तीनों मशीन्स का। तो जो भी क्वेश्चन आप एक में डालोगे उसका आंसर तीनों में सेम ही आएगा। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ जो जजमेंट आ रहा है वो मशीन्स के थ्रू आ रहा है, बट यहाँ जो जजमेंट आ रहा है ये ह्यूमंस के थ्रू आ रहा है। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा ना, इन सबके जो डिसीजंस हैं वो अलग अलग होंगे। तो उस वजह से क्या हो सकता है, जो फॉल्ट्स हो सकते हैं। अब हम लोग अपने इस पे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया तो सारे ह्यूमंस का अलग अलग होता है, बिकॉज सबकी सारी ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। ठीक है। तो इसलिए उनकी डिसीजंस भी हैं वो अलग होते हैं। अब हम हर टाइम एक ह्यूमन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो गलतियाँ नहीं करेगा, बिकॉज वैसे भी बोला जाता है कि इंसान है यार, गलती हो जाती है। ठीक है। तो ये क्यों बोला जाता है? बिकॉज इंसान से हम ये मानते हैं कि इंसान है वो भूल कर सकता है, उससे गलती हो सकती है। तो इसी तरह से अगर हम ह्यूमन जजमेंट डिसीजन मेकिंग में लें तो कभी कभी क्या होता है ना, डिसीजन लेने में इंसान से गलती हो जाती है, फॉल्टी डिसीजन वो ले लेता है। तो रियलिटी इज़ दैट ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग कैन बी फॉल्टी एंड दैट ब्रेकडाउन्स इन इंटरनल कंट्रोल कैन अकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। एंड कुछ ऐसा वो डिसीजन ले लेता है जिससे जो भी उसने कंट्रोल्स लगाए होते हैं ना एंटिटी में, वो सारे के सारे फिर वेग रह जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता उसके एरर की वजह से। सो देयर मे बी एरर इन द डिज़ाइन ऑफ और इन चेंज टू अ कंट्रोल। और कभी कभी वो कंट्रोल्स लगाने में भी मतलब उसको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे रिस्क नहीं है, फिर वो उस टाइप से वहाँ कंट्रोल्स लगाते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है उसका डिसीजन वो गलत होता है एंड वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है। अब वहाँ रिस्क ज़्यादा है एंड आपने कंट्रोल कम लगा दिए हैं, तो क्या होगा? तो आपका ह्यूमन जजमेंट है बट आपका कंट्रोल तो इनफेक्टिव हो गया, रिस्क तो रहेगी एंड मिस स्टेटमेंट भी हो जाएगी। ठीक है ना। तो यही चीज़ है, सबसे बड़ी ये लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकती है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, कि इसमें ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होती है एंड वो कभी कभी फॉल्टी हो सकती है।
फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। अब ये जो भी हमारा प्रोसीजर होता है, हमारा अकाउंटिंग का, हमारा ऑडिटिंग का भी, सब में ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब सपोज़ जो हमारे मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग वगैरह तो करती है, बट क्या ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम मैनेजमेंट करती है? नहीं। मैनेजमेंट ने क्या करा होता है ना, डिपार्टमेंट वाइज अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रखा होता है एंड उसमें बोला जाता है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। अब हुआ ये कि एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किसी को कुछ डिसीजन लेना था, ठीक है। सपोज़ आपके जो डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स से आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, जो आपके डेटर्स हैं उनसे आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, तो वो जो डेटर्स हैं उसके लिए आपको प्रोविज़न बनाना चाहिए, ठीक है। कायदे में तो आपको प्रोविज़न बनाना चाहिए, क्योंकि आपको क्या लग रहा है, ये जो डेटर्स है ना, ये हमें, हमारा जो कंपनी का पैसा है हमें पे नहीं कर रहे हैं और ये जो है डाउटफुल बन गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रोविज़न बनाना चाहिए कि यहाँ रिकवरी नहीं हो रही है, बट उस बंदे ने प्रोविज़न ही नहीं बनाया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, असेट में ये शो हो जाएगा कि जो डेटर्स हैं इनसे ये पैसा आ गया है, बट एक्चुअली वो पैसा क्या है, वो पैसा डाउटफुल है, उसके लिए तो प्रोविज़न होना चाहिए था। तो मतलब अगर नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लेकिन जिस बंदे को उस डेटर का अकाउंटिंग करनी है उसको पता ही नहीं है उसका कैसे यूज़ करना है, तो वो तो हर चीज़ गलत ही दिखा देगा ना। नाउ कमिंग बैक टू द लाइन्स रिटन हियर, इक्वली द ऑपरेशन ऑफ अ कंट्रोल में नॉट बी इफेक्टिव सच इज़ वेयर इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब सपोज़ किसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कंट्रोल्स लगाने हैं मैनेजमेंट को, और उसने क्या करा है कि बी डिपार्टमेंट को उसने ये बोला है कि आपको ये जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसके बेसिस पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, जो मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रही है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट क्या बोलेगी बी डिपार्टमेंट को कि 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है, ABCD 4 डिपार्टमेंट है, एंड मैनेजमेंट ने क्या बोला है, बी डिपार्टमेंट को मैनेजमेंट ने बोला है कि बी डिपार्टमेंट जी आप क्या करोगे, अगर आपको हम कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब उनको जो भी उन्होंने काम दिया उसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उन्हें क्या करना है, इस तरह से उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को बोला है कि ये इन्फॉर्मेशन है एंड इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको अपने डिपार्टमेंट वाइज कंट्रोल्स लगाने हैं। तो मैनेजमेंट के लिए क्या हो जाएगा, वो ओवरऑल कंट्रोल हो जाएगा एंटिटी का, ठीक है ना। अब A ने भी लगा दिए, C ने भी लगा दिए, D ने भी लगा दिया। अब B जो है, B को समझ में नहीं आया, एक इन्फॉर्मेशन उसको आई, इसमें इन्होंने दिया हुआ है एग्जाम्पल एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट मतलब उसको जो रिपोर्ट मिली वो नेगेटिव थी, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं थे, नेगेटिव थे। लेकिन ये जो B महाराज हैं इनको पता ही नहीं था कि उस इन्फॉर्मेशन का इन्हें करना क्या है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है, इज़ नॉट इफेक्टिवली यूज्ड बिकॉज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द इन्फॉर्मेशन, हमारे एग्जाम्पल में B डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स पर्पस और फेज टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। मतलब इसने देखा कि नेगेटिव रिपोर्ट है, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस इंडिकेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बंदे ने ना कुछ भी उसको यूज़ नहीं किया, उसके हिसाब से कुछ भी कंट्रोल्स इसने नहीं लगाए, एंड इसने भी A को देखा, C को देखा, D को देखा, एंड क्या लगा दिए, इसने भी उस हिसाब से ही कंट्रोल्स लगा दिए। इन लोगों को लग रहा होगा कि इनके डिपार्टमेंट में उतना रिस्क नहीं है, बट इसने क्या करा, इसने भी यही कह दिया मैनेजमेंट को कि मेरे डिपार्टमेंट में भी इतना रिस्क नहीं है, एंड मैनेजमेंट ने फिर उस अकॉर्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स लगा दिए। अब क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से जो रिस्क होगा, जो मिस स्टेटमेंट होगी, क्या वो उसको ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो बंदा है, जो अथॉरिटी जिसको मिली है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने की एंड उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेने की, उसको पता ही नहीं है ना कि उस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है लोगों में पर्पस के लिए, तो इसलिए हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो फेल हो जाते हैं। हम कहीं आप लोग भूल ना गए हम क्या पढ़े, हम लोग लिमिटेशंस पढ़े हैं इंटरनल कंट्रोल की। फर्स्ट हमारी लिमिटेशन थी कि सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देती है, सेकेंड ह्यूमन जजमेंट, एंड थर्ड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। 14 मिनट्स की हो गई है, मैं ये 20 मिनट्स की ही बनाऊँगी, ठीक है, 20-25 मिनट्स की, बिकॉज मेरे को अभी इंग्लिश में भी इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। Okay, now collusion among people. Additionally, controls can be circumvented by the collusion of 2 or more people or inappropriate management override of internal control. अब कभी कभी क्या होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं वो कोल्यूजन कर लेते हैं, मिल जाते हैं, और इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल, या फिर मैनेजमेंट भी कभी कभी आउटसाइडर से मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट में एंटर इनटू साइड एग्रीमेंट्स विद कस्टमर दैट अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एंटिटी स्टैंडर्ड। मैनेजमेंट ही मिल गई, अब मैनेजमेंट ही फ्रॉड है, ये तो हमने इनहेरेंट लिमिटेशन में भी पढ़ा है, तो मैनेजमेंट ही मिल गई,
बाहर लोगों से, एंड उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी। तो जो बंदा, आप सोचो, आप जो ओनर है उस कंपनी का वही फ्रॉड है, तो क्या उस कंपनी के अंदर जो भी कंट्रोल्स लगे होंगे क्या वो कहीं से कहीं तक इफेक्टिव होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऑल्सो एडिट चेक्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट ट्रांजेक्शन दैट एक्सीड स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट मे बी ओवरराइडेड। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट सेट करी होती है, उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं अगर कोल्यूजन कर लिया कंपनी के लोगों ने या कंपनी के मैनेजमेंट ने, ठीक है। तो ये भी हमारा सबसे बड़ा इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशन है कि अगर जो कंपनी के लोग हैं वो ही अगर कोल्यूट कर जाएंगे बाहर के लोगों से, तो फिर उस कंट्रोल का क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है। फिर जजमेंट बाय मैनेजमेंट, फर्दर इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स मैनेजमेंट में मेक फर्दर जजमेंट्स ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल इट चूजेस टू इम्प्लीमेंट एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क इट चूजेस टू एज्यूम। तो कभी कभी इन जजमेंट में भी जो है गलती हो जाती है। फर्दर इन मैनेजमेंट में टेक जजमेंट्स ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स इट चूजेस ऑफ, मतलब चूज ही हो जाती है मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ वही हद तक कंट्रोल्स लगाती है जहाँ तक उसको लगता है इम्प्लीमेंट, एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इट चूजेस टू एज्यूम, मतलब अपने हिसाब से मैनेजमेंट जो है वो चूज़ कर दिया कि इतना रिस्क है तो यहाँ इतनी कंट्रोल लगाएंगे। कभी कभी बिकॉज यहाँ पे भी ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग गलत हो जाता है। लिमिटेशंस इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज़, ये सब हमारी कंपनीज़ की हो गई बातें। अब स्मॉलर एंटिटीज़ ऑफन हैव फ्यूअर एम्प्लॉयज़ ड्यू टू विच सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ इज नॉट प्रैक्टिकेबल। जैसे मैंने आपको बताया था कि ABCD ऐसा डिपार्टमेंट वाइज पॉसिबल वहाँ नहीं होता है बिकॉज लोग ही कम होते हैं ना। जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह में देखते हो तो लोग कम होते हैं, तो वहाँ सेग्रीगेशन नहीं करते हैं लोग ड्यूटीज़ का। हाउएवर इन अ स्मॉल ओनर मैनेज्ड एंटिटी द ओनर मैनेजर मे बी एबल टू एक्सरसाइज more effective oversight than in a larger entity. So this oversight may compensate for the generally more limited opportunities for the segregation of duties. On the other hand, the owner manager may be more able to override controls because the system of internal control is less structured. अब ऊपर तो ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती बिकॉज इतने लोग ही नहीं होते हैं ना, जिसको ज़्यादा लोग अगर नहीं होंगे तो मतलब ईजीली पकड़ लेगा टॉप अथॉरिटी। लेकिन सेकंड उस पर ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो ओनर है या मैनेजर है वो भी आराम से ओवरराइड कर सकता है बिकॉज लोग कम है, किसी को पता नहीं है कि ओनर क्या कर रहा है, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं बिकॉज इंटरनल कंट्रोल कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है उसका, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको ओवरराइड कर सकता है। सो दिस इज़ टेकन into account by the auditor when identifying the risk of material misstatement due to fraud। तो आप देख सकते हो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह का जो भी ऑडिटर होता है तो वो ऑडिटर जो है ऑडिट होने जाता है तो ऑडिटर इन सारी की सारी बातों को ध्यान में रख के जो है वो ऑडिट करता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ से हम लोग, बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, दिस इज़ वेरी लेंदी। मैं अब इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आई गेस मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए वरना उन लोग का रह जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ अभी यहीं तक बताती हूँ, ठीक है। आज आपका इतना ही हो पाया, यहीं तक मैंने आपको कराया है। कहाँ तक? जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई नो ये थोड़ा शॉर्ट रहा बट मैं इस वीडियो में ना देखना चाह रही हूँ कि मुझे इसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है, आप लोग सेटिस्फाइड हो या नहीं ऐसे सेपरेट हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ में। फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है वीडियोज़ का वो बढ़ा दूँगी जिससे जो है हम टॉपिक एफिशिएंटली कवर कर पाएँ। बट आज एक इसको ट्रायल वीडियो की तरह रखते हैं हम लोग, तो आज हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट अपना एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है वो कंप्लीट किया है, ठीक है ना। ओके ये वाला जो है हमारा काफ़ी बड़ा है ये पूरा पोर्शन ना, सो दैट इज़ वाई हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके सो फॉर द हिंदी व्यूअर्स ओनली द वीडियोज़ एंडेड एंड फॉर द इंग्लिश स्टूडेंट द स्टूडेंट्स हु वांट टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, let's start the video for them. So children, we have completed till here in the last part, okay, and now we have to discuss the aspects of internal control. So the aspects are basically divided into 4 categories. Now what are the aspects of internal control? Aspects means area, okay. So what are the areas of internal control? So we have to study about general nature and characteristics of internal control, controls relevant to the audit, nature and extent of understanding of relevant controls and components of internal control, okay. So we have to study about all these in the aspects of internal control. The topic is aspects of internal control, right? Now let's start.
So first we have to read the category general nature and characteristics of internal control. Then your second category is controls relevant to audit. Then your third category is from here, nature and extent of understanding of relevant controls. And your fourth category is starting from, I guess this is very lengthy. Your fourth category might also be there. I'm unable to find it. Yeah, this is your fourth category, components of internal control. This is not D, this is fourth. Okay, this is fourth. 4.22. From 4.22 your fourth category is started. So I have explained only the first category, only the first aspect, and that is the general nature and characteristics of internal control to those students who have taught in only Hindi. Okay, so I'll explain you only the general nature and characteristics of internal control in this video. So the purpose of internal control. Now when we are going to study about the general nature and characteristics of anything, then what we have to study is that what is its nature, what are its benefits, what are its limitations. Okay, so they have given two basic characteristics, or you can say the nature of internal control, and first we will read about purpose and then we will read about limitations. Okay, so what is the purpose of internal control? What is the need of internal control? We are going to study here. So why do we implement internal control? To lower the risk of material misstatement or any fraud in the entity. Okay, so they are saying this only, that internal control is designed, implemented and maintained to address identified business risk, which the business risk which we have identified in the risk assessment procedure, we have to lower the impact of those risks. Okay, that may threaten, if happen, then they may threaten the achievement of the entity's objectives, right? So to lower those business risks, what we have to do is we have to implement the internal controls. So what are the entity's objectives that are concerned with the risk? That means what are the objectives that the entity is supposed to fill? So the entity is supposed to make the entity's financial reporting very reliable. But if there will be misstatement in those financial statements, then what will happen? Those financial reporting will become, you can say, it will become fraud, or it will give wrong result. It will define the wrong position of the entity. And so first risk is basically concerned with the entity's financial reporting, and they are saying that to make the financial reporting reliable, the entity should implement internal controls. Okay, now the second point is that all the operations that are going in the entity should be effective and efficient. Okay, then the third point is that the all the financial reporting or all the accounting that is going on in the entity should be in compliance with the applicable laws and regulations or the applicable financial reporting framework which is imposed on them. Okay, so to make sure that the entities do not skip any specific law or regulation or the requirement of any legal requirement. Okay, so what should they do? The entity should impose some controls so that the risk that the entity is not complying with the laws and regulations is lower. Okay, then safeguarding of assets. Now if you will put internal controls, then your assets will be safeguarded. So this is very easy. There are only 4 purposes, and that is your purpose of internal control, and that's talking about reliability, effectiveness, compliance and safeguarding. And the entity is supposed to put these internal controls. Entity means the management of the organization. Okay, this is not about the auditor, this is about internal control that is put by the management. Okay, so the way in which internal control is designed, implemented and maintained varies with entity size and complexity. Now these internal controls, they may vary from entity size to size and complexity to complexity. Like if there is a large entity, okay, the size is very huge, then there will be more controls because the chances of risk are more. Okay, so in that way the amount of or the strictness of the controls may vary. Okay, I hope you are clear with the purpose. And now moving on to the limitations of internal control. Now we have already studied that internal control is to lower the risk. The internal controls cannot completely eliminate the risk, right? So
Therefore, internal controls carry various other limitations also. This we are going to study. So internal control can provide only reasonable assurance. So that is because there are inherent limitations, right? There are inherent limitations in the entity, and therefore there is no absolute assurance that any control can fully eliminate the risk. There will be some amount of risk present in the entity. Okay, so the internal control, no matter how effective, just focus on this line, no matter how effective, can provide an entity with only reasonable assurance. Reasonable assurance about what? About entity achieving the financial reporting objectives. Okay, so the likelihood of their achievement is affected by the inherent limitations of the internal control, because there are some inherent limitations of internal control, and therefore the internal controls cannot fully eliminate the chances of risk of material misstatement in the entity. They just can lower the risk. I am just pressurizing on this word because they cannot fully eliminate. They cannot do this. Internal control can never fully eliminate, and they can just provide a reasonable assurance that the entity is successful in achieving its objectives and goals. Okay, now your second limitation is human judgment involved in decision making. Now, as a human, okay, you and me also, let's talk about us. Have you is there anyone from the audience who has never committed any mistake, or who has never took any wrong decision in his life or her life? I don't think so, because it is in the nature of humans. Machines can never give wrong results if they are properly systemized. Okay, but if there is error in the coding of those machines, then the machines will also give wrong results only. But otherwise, a human decision can be faulty, right? A human can do mistakes, and he is not expected to be perfect, right? So that is why, because there is human judgment involved in the decision making. Now the top authority of any organization, top authority, right? The top authority, so there are humans only, na? There are humans involved in the top authority, right? So these humans, now they may take some wrong decision for the entity. Suppose he is Mr. A. Okay, he is Mr. A. What he says, he just overlooks the entity, and what he says is that I don't think that there is a large amount of risk in the entity, and so what he does is he puts some lenient internal controls. But what happens is he do not considers any unusual circumstances, and what happens is those unusual circumstances which he has not considered occur in the entity, and what happens is all the work in the entity is just wasted, and the entity has to face the loss, and entity has to liquidate. Okay, so sometimes what happens is, because there are human judgment involved. Okay, so the human cannot fully consider, or cannot fully calculate the accurate risk the entity contains, and on the basis of risk only we put some internal controls. Okay, like the auditor is supposed to first check the risk and then design the further audit procedure. The management also first, what does management do? First the management considers the amount of risk, and then the management puts the controls. Okay, so that is why management, or you can say the humans involved in the decision making, they may give some faulty decisions, and therefore because the decisions become faulty, there may be breakdowns in internal control, and this is because of human error. So if any human judgment goes faulty, or there is an error in the decision making, then whole of the internal controls are completely wasted, and they are not successful in determining any of the risk. Okay, so this is one of the control risk also. So first point was internal controls can give only and only reasonable assurance, and second is because there are human judgment involved in decision making, and therefore it may sometimes be faulty, and therefore it may lead to breakdown of internal control. Now before teaching you the third point, let me teach you the fifth point, and they are talking about judgment by management. So further, in designing and implementing controls, management may make judgments on the nature and extent of controls it chooses to implement, and the nature of extent of the risk it chooses to assume. So just now I have told you that on the basis of risk determined by the management designs some internal control.
Okay, so this is as per the wish, or you can say as per the judgment of management, that how much amount of risk the management has to consider, and accordingly only the management will apply some internal controls. Okay, so they are saying that management may on his judgment, on their judgment, they may impose some controls on the nature and extent of risk they choose to assume, and those assumptions, okay, or the level the management has chosen, this level may be sometimes less than the actual risk. Okay, and if the risk that the management has assumed is less than the actual risk, then what will happen? The controls which the management is planning to implement will again not able to prevent, detect and correct the risk of any material misstatement, and again due to the management decision making, the you can say the results will not be in favor of the entity. Okay, so this is the another limitation of internal control. We have discussed the three limitations of internal control till it. First is internal controls have inherent they can give only reasonable assurance, then human judgment involved in decision making, and third, I have told you, judgment by management. I hope you're clear with these points. Okay, now third point is lack of understanding the purpose. Now what happens is, specifically in large organizations, the management cannot look at the whole organization, right? So what does the management do? Management divides whole organization into various parts. Okay, say they have divided the whole organization in 4 parts: A, B, C, D, 4 department wise. Okay, now what they are saying is, A department, B department, C department, D department. They have just divided the whole organization in 4 parts, and the A, B, C, D, they are the leaders of those departments. So the leader is, on the basis of information he will obtain from those departments, he will tell to the management that what is the condition of the that information, or what is the risk associated with that information, and accordingly the management will impose the internal controls. Now what happened now? This is an example. A gave the correct information and the correct amount of risk. C also did the same and D also did the same. But what happened is, B had some exceptional report. B came to an information that denoted some unusual circumstances that may lead to higher risk. Okay, but B didn't know what to do of that information. And what did B did? B just told, like A told, C told and D told. B also told the management that management, the working is going super okay, and there is no problem in the entity, and accordingly the management put the internal controls like A, C and D, like the other departments, on B also. And what happened is that because of the lack of understanding of the purpose by B, the controls in the B department were not able to work on the risk there. Okay, now what happened was, in the example I just told you, that B came to an information that gave an exceptional report, right? But because there was an exceptional report also now, the exceptional report, he could not understand that what he has to do with that exceptional report, and because of the lack of understanding by B, the controls which were implemented by the management did not work for that entity. Okay, I hope I'm clear. Okay, if I'm not, let me explain you this point again. See, I'm explaining you this example again. There were 4 departments, A, B, C, D, right? So what happened is, A got some information, C got some information and D got some information. But B got some information which denoted some unusual circumstances. Okay, now B didn't know that what he has to do with that exceptional report, or the other information which denoted unusual circumstances. And because he was unaware that what he has to do with that information, he failed to take the appropriate action, and the management then imposed the internal controls which they imposed on the rest of the entity, and thus those controls that should not be required some strict controls, right, to lower the risk. But because he was unaware that what he has to do with that information, and therefore those controls again fail to do the prevention, detection and correction of the risk. Okay, now your fourth point is collusion among people.
Now what happens is, sometimes this we have studied in inherent limitations also, sometimes management collide with the outsiders, or sometimes the people in the organization, they collide with the outsiders. So what happened is, additionally, controls can be circumstances by the collusion of two or more people, or inappropriate management override of internal controls. Sometimes management only overrides the internal control, or sometimes the people of the entity, the members of the entity, they only collide with the outsiders, and therefore they may management may enter into side agreements, and they may alter the terms or conditions, or they may alter the internal controls. And therefore, if the management is only involved in the risk, then what will you expect from the entity? And will you expect that those controls which are implemented by the management will be helpful in detecting the risk, or will be helpful in correcting the risk? No, because if the owner is only fraud, then how can you expect the other people to be in discipline? And therefore, this is one of the limitation of your internal control. So we have so far discussed 5 limitations of internal control, and these limitations are basically for the large organization. First is your reasonable assurance. Internal control gives only reasonable assurance. Then there is human judgment. Then third is your lack of understanding for the purpose, collusion among people, and judgment by management. Now let's talk about small entities. So in the small entities, they just have told that because small entities have fewer employees, okay, so the segregation of duties is not practicable, and they think that there are only few employees, and we only, the top authority basically thinks that because there are only few employees and we can alone manage them, we don't need to segregate the duties department wise. Okay, so therefore there are no department wise, like the problem which was there, lack of understanding the purpose. So this limitations is basically not there in the small entity, because the whole of the organization is managed by the top authority only, right? But the other limitation is, the owner or the manager can override the internal control, because there is no proper format for the internal control system, and so the overriding of internal controls is in small entities also. So this is just about the video, and therefore they have just given, this is taken into account by the auditor when understanding the risk of misstatement due to fraud. That is, when the auditor is going to do the audit of a small entity, he will consider all these facts, that because it is a small organization and there is only the owner. Okay, now we are only the future auditors, right? So that is why when you will go to audit, so because you have studied about all this, so what you will do, you will consider all these facts, that because there is only a single owner or there are only few people, they may override the internal control, and so you will be more aware in checking their control system. Okay, so this is only which I have discussed till here, and in the next part I will try to cover the second and third characteristics, sorry, second and third aspect of internal control, and then from the next video we will cover the fourth part. Okay, so these videos may not be so lengthy because I have to explain in Hindi and then in English, and so it is taking a lot of energy. I hope you can understand, but yeah, I'll try my best to cover this topic, this chapter, as soon as possible. Okay, and all the best, and I'll try to upload more videos very soon. Okay, so I'm ending this video here, and if you are really getting help, then please like my video, please share it to maximum people, and please subscribe this channel, and don't forget to hit the your bell icon. Okay, because when you hit the bell icon, you don't need to search for my videos. Okay, the videos will be displayed in your notification section only. Okay, so this will help you in your saving of time, because time is precious, right? So I'm ending this video here, and if you're having any doubts, you can comment down. Okay, so ending this video here. Thank you so much.